So on fifth paragraph, she says, "I looked pale green that morning. I fell into it, not the baby blue I expected. I must have been crying. My cheeks were wet. Only the thump of a wild heart made noise. I did not know how to keep it quiet." So she's narrating her feelings, कि क्या फ़ील कर रही थी ये उस दिन, उस सुबह जब जिस दिन इसको जंप करना था, जिस दिन थोड़ी देर बाद ही इसको जंप करना था फ्रॉम द एरोप्लेन वेयरिंग अ parachute on her back. She was tense, she was nervous, she had been crying, her heart made noises, एंड उसको समझ नहीं आई थी कि अपने हार्ट को कैसे काम डाउन करे. सो बट स्टिल ऑल्दो शी इज़ अफ्रेड, येट शी हैज़ टेकन अ डेयरिंग स्टेप that she says that she herself decided to jump from the aeroplane. That May my mind was so as clear as clay. I did not have the imagination to perceive the risks, to understand that if the wind grew nasty, I might be electrocuted on high tension wires, smashed on a roof, drowned in water, hanged in a tree. I was sure nothing would happen because my intentions were so good. Just as young soldiers start out certain of their safety because they know nothing. So she's saying कि कुछ भी हो सकता. That morning my mind was very clear. मैंने कुछ गलत perceive नहीं किया था कि कुछ गलत भी हो सकता है. Things can go nasty. Then she's saying कि I might be electrocuted. हो सकता था high tension wires में जाके फंस जाती, जहाँ पे electrocuted हो जाती, पानी में drown हो जाती. She could be hung on a tree, किसी ऊंचे दरख्त के साथ लटक जाती, या किसी रूफ़ के साथ आके टकरा सकती थी. बहुत कुछ हो सकता था. येट शी डिड नॉट थिंक अबाउट एनी सच थिंग. उसने कोई रिस्क नहीं सोचा, कोई कुछ नहीं सोचा. शी इज़ सेइंग कि माई इंटेंशंस वर गुड. बिल्कुल उसी तरह जैसे यंग सोल्जर्स जब निकलते हैं अपने महाज पे, उनकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, तो दे आर स्टार्ट आउट सर्टन ऑफ देयर सेफ्टी. उन्हें पता होता है कि हमें कुछ नहीं होगा, जो होगा वो दूसरे को ही होगा. यंग सोल्जर्स इसी तरह सोचते हैं. सो इसने भी यही कुछ सोचा है कि कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज माई इंटेंशंस आर गुड. Her friends drove her to Orange, Massachusetts, 70 miles west of Boston, for the opening of the first U.S. sports parachuting center where I was to perform. So it was the creation, the passion of a Princetonian and ex-Marine named Jacques Still, who organized the first U.S. jumping team in 1956. So ये Orange, Massachusetts, 70 miles from Boston, ये जगह उस जगह पहुंची है जहाँ पे ये पैराशूटिंग सेंटर है. और किसने ये पैराशूटिंग सेंटर क्रिएट किया है? एक पैशन था एक प्रिंसटोनियन का, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ एक्स मैरीन, जिसका नाम था जैक्विस स्टिल, and he had organized this first US jumping team in 1956. Or according to Jacques Still, parachuting was as safe as swimming, he kept saying, calling it the world's most stimulating and soul-satisfying sport. So his center was for competitions and the teaching of skydiving. Instead of hurtling towards the earth, skydivers maintain a swan dive position, using the air as a cushion to support them while they. So ये एक तरीका उसने सिखाया था कि स्काई डाइविंग के लिए जो है एकदम से स्काई अर्थ पे उतरने के बजाय जो स्काई डाइवर्स हैं वो एक स्वान डाइव पोजीशन लेते हैं, अर्थ एयर को एक कुशन बनाते हैं. वो कोई ख़ास तरीका होता है, ख़ास मूवमेंट करते हैं, लेग और आर्म की मूवमेंट के वो आराम से उतर जाते हैं. सो ही सेड कि स्काई डाइविंग इज़ एज ईजी एज स्विमिंग. None of that stuff was expected from any of us in the little beginners class. So हम में से किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बहुत परफेक्ट स्काई डाइविंग हमें आ जाएगी. बिगिनर्स क्लास थी, ज़ाहिर है इनकी अभी ये सीख ही रहे हैं कैसे स्काई डाइविंग करेंगे. हमें अभी इनको सिर्फ जंप करना था आफ्टर ब्रीफ बट इंटेंस इंस्ट्रक्शंस with Estill's new designed parachute to show that any dupe could do it. So Estill का newly designed parachute है, कोई भी dupe कहते हैं stupid person, वो भी इस पर से jump कर सकता था. It was a parachute with a 32-foot canopy.
और लार्ज कटआउट होल है फनल्ड एयर के स्केप के लिए. सो कैनोपी कहते हैं अम्ब्रेला लाइक फिगर, बहुत घेरे वाली फिगर थी. उस घेरा सा हो, पैराशूट कैनोपीज जैसे अम्ब्रेला के जैसी फिगर थी, और एक होल भी है उसमें एयर के स्केप होने के लिए. यू स्टेयर्ड विद 2 wooden knobs instead of having a pull hard on the back straps or risers. So 2 wooden knobs भी साइडों पे होते हैं थे इसके. उनको आप पकड़ के पैराशूटिंग करते हैं, मूवमेंट कंट्रोल करते हैं पैराशूट की, इंस्टेड ऑफ जस्ट पुलिंग द हार्ड स्ट्रैप ऑन द बैक स्ट्रैप ऑन जैसे बैक से खोलने के बजाय इसके 2 साइड्स में वुडन नॉब्स थे. The new parachute increased lateral speed, slowed down the rate of descent, reduced oscillation. So नीचे उतरने की स्पीड को कंट्रोल करता था ये. ऑसिलेशन होता है इधर उधर हिलना, टू एंड फ्रो मूवमेंट, उसको भी बहुत कंट्रोल करता था ये नया पैराशूट. इट वॉज ईजी. वी वर टोल्ड we could even land standing up, but that we should bend our knees and lean to one side. सो उनको बताया गया था कि आप खड़े खड़े भी उतर सकते हैं, लेकिन जो उतरने का तरीका है दैट इज़ दैट वी शुड बेंड आवर नीज़ एंड, और एक साइड पे गिर जाएं, एक साइड पे टेढ़े होके गिर के उतरें. आप उसी तरीके को फॉलो किया जाता है. दैट इज़ द बेस्ट वे टू स्काई डाइव फॉर लैंडिंग. स्काई डाइविंग, लैंडिंग ड्यूरिंग स्काई डाइविंग के लिए ये पोजीशन ज़्यादा बेस्ट है. टू टिल्ट ऑन वन साइड एंड टू लैंड ऑन द नीज़, टू बेंड द नीज़. The beginners jumped at 8 a.m. The expert skydivers performed their dazzling tricks later when a crowd came. So ये जो है शुरू में beginners ने jump किया, बाद में experts ने अपनी tricks की. Then in paragraph 8 it's the 2 of us boarded a Cessna 180 that lovely morning. The wind no more than a tickle. I was not myself, no longer thin and no longer fast. The jumpsuit, the equipment, the helmet, the boots had made me into someone thick and clumsy. So 2 people, she along with another partner, boarded Cessna 180 that lovely morning. Or उस time she was not myself, she's saying. The wind no more than a tickle, wind भी ज़्यादा नहीं ने feel हो रही थी. And whatever she was wearing, the jumpsuit, equipment, helmet, boots, बहुत इसको मोटा सा कर दिया था. She was not looking slim and thin, she was looking very thick and clumsy, क्योंकि वो ड्रेस ही कुछ ऐसा था. Moving as strangely as if they had put me underwater and said I must walk. So movement भी बहुत मुश्किल हो रही थी, इतने सारे सामान के साथ, रस्सियों के साथ. The way whatever she is wearing is making it difficult for her to move. It was hard to bend, to sit and to stand up. I did not like the man with me. He was eager and composed. जो साथ इसके शख्स था बैठा हुआ, he was a man. He was very enthusiastic to jump and he was composed as well, calm, relaxed, not worried. So she did not like him for his composure. I wanted to smoke, to go to the bathroom, but there were many straps around me that I did not understand. So कुछ भी करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है because of her dress. At 2300 feet, it's a great height, the hateful happy man went out, making a dumb thumbs up sign. So that man has gone, who was seeming very composed and calm, and she disliked him for his composure.